a Pascal triangle in Python. Okay, now what exactly is this Pascal triangle? All right, friends, I would be glad like if you could let me know I'm audible to you, right? I'm audible, friends, correct? Okay, I'm audible to you, right? Okay, anyways, if you could put it in the comment section, I'm audible to you or not, that would be of great help. Anyways, let me quickly give you a go through of a Pascal triangle. Check it out. Let me take a simple notepad file here. Okay. Now, what does Pascal triangle look like? Yeah, thank you, Bhumi. Okay, thank you very much. Okay, see, it's a little Pascal triangle is a little standard program of Python. It requires a lot of logic, and if you search the way different programmers have written Pascal triangle ka code, there are many different ways you can code it. Okay, Pascal triangle वाला program हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं. Right? I'm showing you one of the easiest method that way. Say Pascal triangle is like I write 1, उसके बाद में I write 1 and then again 1. Or let me do one thing. Okay, just a moment please. Give me a moment of time. I need to connect my phone. Okay. Okay. Take it. Alright. This is what is Pascal triangle. Okay. Say I write here 1. Then in the second row we write 1, 1. In the third row we write 1, 2, 1. You want to give this spacings. You don't want to give, you do not give the spacing. That's up to you. But if you give spacing, it will look a little neat. It is more appealing kind of program. The third row will be 1 followed by 3, 3, 1. Next row will look like 1, 4, 6, again 4, and then 1. Okay, now how this logic is built, check. This is 1. First row, we first accept from the user, program ऐसे जाएगा. Logic कैसे बनाना है देखिए. There are a lot of logics, in fact those who know permutation and combination. Okay, I just give you one hint written here. So this is actually if you have a formula of NCR, n factorial upon n minus r factorial and then r factorial, even that will solve the case. Alright, what we are going to do, we will be writing this code with for loop. Right, acha. So first of all in this program we have to accept from the user number of rows. Number of rows. Say how many rows he wants in a Pascal triangle. You check, there are total 5 rows in this triangle. Row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, row number 5. Alright. So there are 5 rows. First row is always fixed. That is 1. I'm just writing here. Okay. I write 1 in a list. Alright, all these rows, we are first going to calculate the elements which are going to come in them and store it as a list. Right, तो दरअसल ये list of list जैसा बनेगा. 1. Who are the numbers in the next row? 1 and 1. So I'm going to find out the number of the next rows and store it as a list element. Right. Third row के elements numbers कौन-कौन है? 1 to 1. So we will find out the numbers of the third row and the generated numbers we will store it in a list.
Who are the numbers of the fourth row? 1 3 3 1. So 1 3 3 1. Okay, I store them as a list. Who are the elements of the fourth row? 1 4 1 4 6 4 1. So we will be storing it again as a list, and finally the main list will close. So we are actually expecting this type of list. Okay, but हम करते क्या है, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, this first row we will hard code, right? Let us say result, variable result, which is equal to a big list which will have in itself a sub list with number 1. Okay, please write in the comment section you are understanding or not. Alright, कोई चीज़ नहीं समझ रही है, कहीं पर बीच में मिस हो गए, कोई बाउंसर स्टेप चला गया तो बता दीजिए प्लीज. Alright, fine. Now what is the logic here? See, 1. Right? Always consider that there are two invisible elements in each row. Head, leading 0 and trailing 0. Right? अभी कैसे काम करेगा देखिए, 0 plus 1 is going to give us this one, and then 1 plus 0 is going to give us this one. तो अगला रो ऐसा बनेगा. ऑलराइट, सेकंड रो से थर्ड रो पर जाने के लिए फिर से अज्यूम करिए आगे और पीछे दो इनविजिबल जीरोज हैं. बस ये जीरो को लेकर और एग्जिस्टिंग नंबर्स को लेकर तीसरा रो बनाइए. हाउ? 0 plus 1. So this addition is going to give us 1, which is here. 1 plus 1. This addition is going to give us 2, which is here. And then 1 plus 0. This addition is going to give us again 1, which is here. Right? चलिए, तो तीसरा रो रेडी हो गया with the numbers 1 2 1. तीसरे से चौथे रो पर जाने के लिए अगेन अज्यूम दैट देयर आर टू इनविजिबल जीरोस, हेडिंग 0 एंड ट्रेलिंग 0, आगे और पीछे. नाउ वी विल बी लिटिल फास्टर, अज्यूमिंग सम ऑफ यू और मेनी ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड. 0 plus 1 will give us 1. 1 plus 2 will give us 3. 2 plus 1 will also give us 3. 1 plus 0 will give us 1. So 1 3 3 1 we generated and stored it as a list. Alright, चलिए चौथे से पांचवें रो पर जाने के लिए again assume there is 0 and 0. Now we will be again faster. 0 plus 1 1. 1 plus 3 4. 3 plus 3 6. 3 plus 1 4. And finally 1 plus 0 1. Is that correct? This was the Pascal triangle, assuming if number of rows are 5. But if number of rows are not 5, it is 7 or it is 8, तो ये हमको फिर आगे चलता जाएगा, ये करते जाना है. Alright, please write in the chat section, are you understanding? Is the concept of it clear? Deval, Bhumi, okay, thank you. 2 of the replies I got. Pascal triangle कैसे बना? Now let me start writing the code for the same. Alright, इसका कोड हम अभी एक बार लिखना स्टार्ट कर देते हैं. Alright, okay, let me first use, okay, I'll directly go to Jupyter notebook. Here we are. Okay, so first of all, n is equals to int input, enter the number of rows. Okay, alright. The res is one variable, say result. This is going to contain the final list. उसमें जो first row होता है means this row, friends, ये वाला. Alright. Now I have edited this list a lot. Let me draw a Pascal triangle on the left side again in short. तो जो पहला one होता है to start the Pascal triangle, that is hard coded in the program. Okay. तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे? res is equals to 1. This is a list of list. Try to understand. res is a list of list. ठीक है. अभी for loop for I in range. Actually, if user says 5, so we have to generate 5 row. If n is equals to 7, मतलब हमको 7 row generate करना है. But 7 में से एक रो का वैल्यू तो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं ना.
आप समझ रहे बात? 5 रो अगर वो बोलता है तो पहला रो इज जस्ट 1 टू स्टार्ट द पैस्कल ट्राइंगल, सेकेंड रो इज क्रिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट रो, थर्ड रो इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेकेंड रो, ऐसा चलते चलते हो सकता है 10th रो वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम 9th रो. No, but first row तो we keep it hard coded, correct? So if the user says I want to generate 5 rows, we will run loop only till 4 because एक row की value हम generate कर चुके हैं. Alright, so what will I write? Not n but n minus 1. Okay, एक बात और ध्यान रखिए, जब आप लोअर लिमिट नहीं लिखते तो by default it is always 0. मतलब ये पीछे ऐसा चलेगा 0 to n minus 1. If you don't want to start your loop in range from 0, if you want to start from any other number, तो लिखना mandatory है. Right? And if you do not write the lower limit, then it is always 0 by default. You got my point? Right? So if 0 comma नहीं भी लिखा तो by default it will start from 0. Otherwise आपको बताना पड़ेगा. So give me one rough dry run till here. Suppose n is equals to 5. So n minus 1 will be what? 4. And this loop is going to run from 0 to 4. Hoping you understand. 0 to 4 matlab total? Total how much? 0, 1, 2, 3. 4 consider होगा नहीं, वो 3 तक ही जाएगा, right? I hope you got. Upper limit से हमेशा एक कम चलता है. तो हमने बेसिकली यहां पर क्या लिखा है? n minus 1. That means from 0, 4. अरे but 0, 4 is total 5 times. Hoping you understand. जो 4 तक जाएगा ही नहीं, वो. It will go till 3. So 0, 1, 2 and 3. That will make total 4. और एक रो जो हम ऊपर ऑलरेडी प्रिंट कर चुके, that will make total 5. Is that clear? Concept clear till here? Fine. Anyways, this was the comment for us. अभी इसमें करना क्या है हमको? See, let me check if there is any doubt here. All right, nothing. Fine. Okay, what to be done here is, see, we will create one temporary list where we will add 2 zeros behind every generated row. You understood? जैसे कि रो नंबर 2 जनरेट करने के लिए we will call the numbers of row number 1 और सबसे पहला उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में 2 जीरो लगा देंगे, ऐड कर देंगे. वो कैसे करेंगे? लेट्स चेक. से देयर इज वन टेम्पररी लिस्ट. इसमें आई एम स्टोरिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ अवर रिजल्ट. हु इज द लास्ट एलिमेंट राइट नाउ? 1. दैट इज दिस लिस्ट. Is it right? ये वाली लिस्ट इज द लास्ट एलिमेंट. ऑफ कोर्स वो फर्स्ट है क्योंकि एज ऑफ नाउ वो एक ही एलिमेंट है, बट ये लिस्ट आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा दिखने वाला है. Am I right? The one we have created here. Check this way. ये लिस्ट बढ़ते बढ़ते it will grow in size and it is going to become like this. Hoping you are understanding. Right? So whoever is the last element, मतलब सेकेंड रो जनरेट करने के लिए लास्ट एलिमेंट वॉज फर्स्ट रो, तो इसके आगे पीछे हम 0 बनाए ऐड करेंगे. तो ये लिस्ट हमारे पास ऐसा होना चाहिए, मतलब जो 1 जो पहले था वो तो रहेगा ही, 0 और 0. फिर उसके अंदर हमको एक और लूप चलाना है विच विल ऐड 0 प्लस 1 एंड देन 1 प्लस 0 to create the next two numbers which will be 1 and 1. ठीक है, दूसरा आइट्रेशन का ड्राई रन दो. कैसे करेंगे ये? चलिए, अभी अगले आइट्रेशन में हमारा लिस्ट क्या बनेगा? पहला तो ये नंबर है वो 1 ही रहेगा. उसके बाद में 1,1 जनरेट हो चुका है अभी, राइट? सो दिस इज 0, दिस इज 1. और अगर नेगेटिव नंबरिंग करोगे आप ये बड़ा लिस्ट RES का, फ्रेंड्स, नेगेटिव नंबरिंग अगर आप करोगे, सो दिस विल बी इंडेक्स नंबर -1, दिस विल बी इंडेक्स नंबर -2. Am I right? -1 means what? Those who are new with us today, last element of the list. बराबर. तो अगला रो जनरेट करने के लिए हमको पीछे वाले रो को लेना पड़ेगा, which will be the last element. So in this case the last element is 1 and 1. करेक्ट? उसके आगे पीछे 0 और 0 ऐड करना पड़ेगा, so that ये लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा अभी.
0, 1, 1 and then 0. Now if you add, what will happen? 0 plus 1, 1 plus 1 and 1 plus 0. 0 plus 1 1, 1 plus 1 2, 1 plus 0 1. तब जाकर 1 और 1 से ये लिस्ट बनेगा 1 2 1. इज दैट क्लियर? फाइन. सो अभी अपडेट होकर RES जो है, दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट, राइट? सो अपडेट होकर अभी क्या हो गया? 1 1 1 1 2 1. बट अगला रो जनरेट करने के लिए हु वाज द लास्ट रो? अभी RES का -1 मतलब ये वाला एलिमेंट है 1 2 1. सो 1 2 1 के आगे पीछे 0 और 0, ताकि 0 plus 1 दे 1, 1 plus 2 दे 3, 2 plus 1 also gives 3, 1 plus 0 gives 1. और इस तरह हम थर्ड एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट 1 3 3 1 जनरेट करें. इज दैट करेक्ट? फाइन. सो अभी लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? दिस लिस्ट फ्रेंड्स, 1 3 3 1. सो नेक्स्ट एलिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अगला सब लिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, द लास्ट लिस्ट जो भी है उसके आगे पीछे 0 अपेंड करना पड़ेगा. Alright, if somebody could please acknowledge in the chat box the concept understood of the program till here. Shall we go to coding if the logic understood? No? You want me to explain something else? Okay, fine. Anyways, let me show you how can we do that now. कैसे करेंगे देखिए. So for I in range n-1, उसने बोला है 5 रो, तो हम लूप 4 तक ही चलाएंगे क्योंकि एक रो हम ऑलरेडी ऊपर जनरेट कर चुके हैं. करेक्ट? ठीक है. तो अभी इसमें होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you enter into the for loop, first add 0 heading मतलब leading and 0 in the last row. Oh, I hope you understood my point. Is it right? आपको अगर चेक करना है ये कैसे काम करता है तो एक बार इधर देखिए. See, where is my idle prompt open? Idle, can you see anywhere? I have opened a lot of stuffs today. Okay, let me open it. Ignore that output. That was for some of my purpose. Say 0 plus 1 plus 0. 3 list we are concatenating, so it has made 1 list. Correct? 3 लिस्ट को concatenate किया तो ये एक लिस्ट बन गया. Similarly temp का भी वही हाल है यहाँ पर. Right. Fine. उसके बाद में I just create one blank row here. Row. इसके बदले में आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो. A B C कुछ भी लिया तो चलेगा. Let us take it as A. एंड हमको क्या करना है? इस ब्लैंक लिस्ट में नया लिस्ट बना के RES में ऐड करते जाना है. जैसे 1 1 के बाद दूसरा लिस्ट आएगा 1 1 1 1 के बाद पास्कल ट्रायंगल का तीसरा लिस्ट आएगा 1 3 3 1 और 1 2 1 समथिंग लाइक दैट. इज इट राइट? फाइन. तो कैसे करेंगे ये? सो दीज आर 2 लिस्ट क्रिएटेड. वन इज अ टेम्पररी लिस्ट, वन इज एन एम्प्टी लिस्ट. नाउ आई रन अ फॉर लूप. सो फॉर j in range. People, this is little tricky to understand, जबकि इसके बहुत possible solutions हैं. I'm showing you one simple one. All right. Now, what is I? I represents the row number. All right. When you say I equals 0 means we are at first row. I equals 1 means we are at the second row. I equals 2 means we are at the third row. आप जिस row number से start कर रहे हैं, I think we are starting from the second row. क्योंकि पहला रो हमने ऑलरेडी हार्ड कोड करके ऊपर रखा है. राइट? तो आई अगर बढ़ेगा मतलब रो नंबर बढ़ेगा. राइट? बट ईच रो हैज सम नंबर्स एज अ कॉलम ना. एम आई राइट? हर रो के अंदर कुछ नंबर्स है एज अ कॉलम. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ वी आर एट रो नंबर 1, हियर वी गो. सो रो नंबर 1 हैज हाउ मेनी नंबर्स? 1. बट रो नंबर 2 will have 2 ones or 2 number. Is it right? Row number 3, this is row number 3. It will have 1
2 1। मतलब आप देखोगे रो नंबर 3 में आपको 3 बार इनर लूप रन करना पड़ेगा टू जनरेट 3 कॉलम्स ऑफ दिस रो, करेक्ट। रो नंबर 2 में आपको 2 इनर लूप जनरेट करना पड़ेगा टू जनरेट 2 कॉलम्स ऑफ दिस रो, करेक्ट। रो नंबर 4 इट इज व्हाट 1 3 3 1। सो जब आप रो नंबर 4 पर आओगे, रो नंबर 5 पर जाने से पहला you have to generate one inner for loop which will run 4 times and generate the 4 numbers here, correct? I hope you got my point, right? So if I am not wrong, see this though we have already generated in the list. Every next row, check this formula is right or not. Every next row will have one element more than the previous row. Right? तो रो नंबर 2 में कितने एलिमेंट है 2, विच इज 1 मोर देन द प्रीवियस रो। हाँ, हमको प्रीवियस रो से कनेक्टेड रहना है ना गाइस, रिलेशन में प्रोग्राम कोड करना है। रो नंबर 3 हैज 1 एलिमेंट मोर देन द प्रीवियस रो। रो नंबर 4 हैज 1 एलिमेंट मोर देन द प्रीवियस रो विच इज द थर्ड रो, राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे जाएगा, हुएवर इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट रिजल्ट, करेक्ट, जो भी लिस्ट रिजल्ट का लास्ट एलिमेंट है उसका लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द मेन लिस्ट प्लस 1। इज दैट करेक्ट? सो फॉर एग्जाम्पल let us take a dry run here. If res is right now 1, who is the last element, who is the last list here, that is 1. What is the length of the list? 1. Is it? इसका मतलब अगला लिस्ट का लेंथ शुड बी लेंथ ऑफ रिजल्ट प्लस 1, that is equal to length. What is length of the last element? That is 1. तो ये फॉर्मूला यहां पर आएगा ब्रैकेट। Is that correct? So this answer of length of the last list is 1. उसमें 1 ऐड करोगे आप, so that will become length of the next list. Am I right? Have patience. Slowly clear होगा. Pascal triangle is a standard program, people. वो कोई for loop से कोड होने वाला इतना भी सिंपल प्रोग्राम नहीं है, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए, right? तो चलिए दूसरा लिस्ट जिसकी लेंथ 2 होंगी वो बन गया, राइट। तीसरी लिस्ट में इनर लूप कितनी बार रन करना पड़ेगा, उसके पास 3 नंबर्स रहेंगे। 3 नंबर रहेंगे मीन्स आप उसको पीछे वाली लिस्ट से कैसे रिलेट करोगे, पीछे वाली लिस्ट के जितने भी नंबर है प्लस 1, राइट। सो अभी हु इज द लास्ट एलिमेंट, टेल मी, हु इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट रिजल्ट, दैट इज 1,2। ये वाला लिस्ट इज द लास्ट एलिमेंट। व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, बताते जाइए, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, दैट इज 2, करेक्ट। उसमें प्लस 1 करोगे तो दैट मीन्स दैट विल बी द लेंथ ऑफ द थर्ड लिस्ट, और उतनी बार आइट्रेशन थर्ड लिस्ट में चलाना पड़ेगा, करेक्ट। फाइन, उतनी बार आइट्रेशन चलकर सपोज नंबर जो जनरेट होगा वो ये होगा 1 2 1। आई थिंक दिस इज 1। इज दैट करेक्ट? नाउ हु इज द लास्ट एलिमेंट, res ऑफ -1, मतलब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 2 1 है। इसका लेंथ कितना है, 3। Is that correct? इसका लेंथ इज 3, सो 3 + 1। फॉर्मूला बताइए, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो भी लास्ट एलिमेंट का लेंथ है उसमें 1 ऐड करना, बट अभी लास्ट एलिमेंट का लेंथ जो है वो 3 है, उसमें 1 ऐड करने पर इट विल बिकम 4। मतलब अगला जो लिस्ट बनेगा उसमें 4 इनर फॉर लूप 4 बार रन करना पड़ेगा। 4 बार रन करने से आउटपुट कैसे आएगा, 1 3 3 1। I hope you understanding my point. Is that correct? Fine. उसके बाद में अभी मुझे बताइए who is the last element of the list? That is 1331. इसका लेंथ कितना है, 4 है। Is that correct? The length is 4. So 4 में +1 करने पर it will become 5. That means the next row will have total 5 element, or it has to run its inner for loop 5 times. Correct. Fine. So this is how the logic comes here. For j in range, j
manages the columns in that particular row. Got it? I is to create a row or iterate in the row, but J is to iterate for columns of one particular row. राइट? तो कॉलम कितने चाहिए भाई? जो भी लास्ट एलिमेंट की लेंथ है उसमें +1. इज दैट करेक्ट? ऑल द ब्रैकेट्स आर राइट? यस. फाइन. अभी उसमें करना क्या है, अंदर करना क्या है बताइए मुझे. इफ द लास्ट एलिमेंट वॉज, वेयर इज द नोट पैड? हियर इट इज. सपोज यहां से स्टार्ट करो फिर से. कम ऑन. इनर फॉर लूप में करना क्या है? लेट मी सी कितने बच्चे आप में से समझते हैं. इनर फॉर लूप में क्या करना है? चलिए, इफ द लास्ट एलिमेंट इज 1, राइट, बट ऊपर हमारी टेम्पररी लिस्ट ने उसमें 2 0 ऐड कर रखा है. करेक्ट? दैट इज 0 एंड देन 0. होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट? अभी आपको करना क्या है? व्हाट वी हैव रिटन द फॉर लूप एज फॉर j इन रेंज 0, कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ. लेंथ ऑफ द लास्ट एलिमेंट +1. इज इट करेक्ट? तो अगर पहला नंबर 1 है तो j का लूप यहां पर क्या होगा? 0 to 1 + 1. दैट मीन्स 2. एम आई राइट? 1 + 1. So that means for the first inner for loop you are running it till from 0 to 2. मतलब वो 0 और 1 दो ही बार रन होगा. Is it right? तो मतलब पहला वैल्यू इसके हिसाब से j का 0 हो जाता है. राइट? अभी जो अपन ने ब्लैंक रो बनाया था ऊपर, रो या b, a के नाम से बनाया था मैंने, रिमेंबर? ऊपर एक ब्लैंक रो बनाया था ना, a. राइट? आपको क्या करना है? a में अपेंड करो. अपेंड इज अ फंक्शन टू पुश अ न्यू एलिमेंट इन द एंड. लिस्ट में अपेंड करो. रिलैक्स, इट्स वेरी सिंपल. दूसरा तीसरा इटरेशन में समझ आ जाएगा. पहले में आता है तो और भी बेहतर है. ओके, टेल मी नाउ. वो 1 के आगे पीछे तो हम 0 ऐड कर चुके हैं. ऑलराइट, सो लेट मी से टेम्प ऑफ दिस लिस्ट इज अ टेम्पररी लिस्ट ना. ये टेम्प है पीपल. टेम्प पहला नंबर कैसे बनना चाहिए? 0 और 1 से. राइट? सो टेम्प ऑफ j प्लस temp of j plus 1. Give me the dry run. कॉमेंट में मुझे ड्राई रन देकर बताइए. j in the first iteration is 0. So that means you want to say temp of j, that is temp of 0 plus temp of 0 plus 1, that means 1. Right? पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को ऐड करके a में अपेंड करो. इज इट राइट? सो व्हाट इज टेम्प ऑफ 0? 0. व्हाट इज टेम्प ऑफ 1? 1. 0 plus 1 will give us what? 1. सो a डॉट अपेंड में 1 ऐड हो जाएगा. तो अभी आपका a ऐसा दिखेगा. a इज इक्वल टू 1. इनर फॉर लूप आगे जाएगा. अभी j 0 से 1 हो जाएगा एंड 1 इज स्टिल लेस देन 2. एम आई राइट? तो दूसरा वैल्यू j के लिए मुझे ये फॉर्मूला फिर लिखकर बताइए कैसे चलेगा. नाउ j इज इक्वल टू 1. 1 इज लेस देन 2. सो टेम्प ऑफ j मतलब कि टेम्प ऑफ 1, j तो 1 है ना, राइट? सो टेम्प ऑफ j मीन्स टेम्प ऑफ 1 प्लस टेम्प ऑफ j प्लस 1. हु इज j? 1. 1 प्लस 1 मतलब 2. इज इट? तो ये j ऑफ 1 है, ये j ऑफ 2 है. 1 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 1. तो a में फिर अपेंड हो जाएगा 1. तो a जो अभी तक का खाली 1 था उसमें 1 प्लस 0 ऐड होकर जो नया नंबर एडिशन का है वो इधर ऐड हो गया. इज दैट करेक्ट? राइट? फाइनली इनर फॉर लूप से बाहर आने के बाद डू नॉट फॉरगेट टू अपेंड दिस सब लिस्ट a इनसाइड द मेन लिस्ट रिजल्ट, क्योंकि अभी तक हमारा रिजल्ट का हालत ऐसी है. इज इट राइट? So this new a or a new sublist that we generated, that will be appended in res. So it will become like this: res dot append a. Are you understanding? Clear? Fine. चलिए एक और बताइए फिर. Suppose now this was for row number 2. Am I right? Then what will happen for row number 3?
राइट। रो नंबर 3 की मुझे पता है, रो नंबर 3 मीन्स व्हाट, 1 जनरेट हो गया। अभी तक ये RES ऐसे हो गया, RES 1, 1, 1, इज इट राइट। नाउ वी वांट टू जनरेट रो नंबर 3। रो नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन होंगे वो जनरेट करना है, राइट। रो नंबर 3 के लिए जे कॉलम की रेंज कैसे बनेगी, पीछे वाली लिस्ट की लेंथ मतलब 2 + 1 दैट इज 3। तो लूप 0 से 3 तक जाएगा, 0 से 3 मतलब 0, 1 और 2 होगा। इज दैट करेक्ट, राइट। बट सबसे पहला काम क्या होगा, ये फॉर लूप के बाहर जब i इंक्रीज होगा तो पुराना वाला जो लिस्ट है अपना 1, 1 उसके आगे पीछे 2 0 ऐड हो जाएगा। तो टेम्प अभी ये वाला लिस्ट है, करेक्ट, राइट। ओके, ए कोई आउटर फॉर लूप ने फिर से ब्लैंक लिस्ट बना दिया, इसके आगे i था, am I right, for I in range n-1 if you have remembered. कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑलराइट। चलिए, तो अभी 0 to 3 हो गया, 0, 1 and 2। नाउ टेल मी, j is 0, सो a में फिर अपेंड हुआ 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1, सो 0 + 1 ऐड होकर a में चला जाएगा, 0 + 1 is 1, ऑलराइट। चलिए, j जब 1 होगा तो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स नंबर मतलब कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट ऐड होगा। व्हाट इज टेम्प ऑफ 1, 1। व्हाट इज टेम्प ऑफ 2, टेम्प ऑफ 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 2 पर तीसरा एलिमेंट होगा, सो 1 + 1 दैट मीन्स 2। इज दैट करेक्ट। तो इस बार 1 के आगे जो नंबर ऐड होगा वो 2 होगा, राइट। इनर फॉर लूप का j will increase and it will become 2. Is it right? 2 is still less than 3. बात समझ रहे हैं आप? So this formula will go how? Temp of 2 plus temp of 2 plus 1 मतलब के 3। सेकेंड एंड थर्ड इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड इंडेक्स नंबर मीन्स एलिमेंट नंबर 3, थर्ड इंडेक्स नंबर मीन्स एलिमेंट नंबर 4। So 1 + 0 that is nothing but 1. So 1 will be appended in A. 1 और 2 के साथ 1 अपेंड होकर A की हालत ऐसी हो जाएगी, that's 1, 2, 1. Is that clear? Fine. In the next loop, counter आगे definitely जाएगा. In the next loop, but now J will become 3. J will become 3. Sorry, 3 is not less than 3. 3 is equal to 3. So we have to come out of this loop. Is that correct? Fine. इस लूप से बाहर आ गए मतलब हम किधर आ गए, यहाँ पर आए। तो ये जो नया सब लिस्ट बना, ये लिस्ट RES में अपेंड हो जाएगा। तो अपेंड होकर अभी अपना RES की हालत कुछ ऐसी होगी, न्यू सब लिस्ट इज 1, 2, 1, राइट। चलिए, फिर से आप चले गए आई आउटर फॉर लूप में, 0, 0 वॉज लेस देन 4, n-1 ना, हम n को 5 अज्यूम किए पीपल, तो n-1 मतलब 4 हुआ। 0, 0 was less than 4, 1, 1 was less than 4, 2, 2 is still less than 4, करेक्ट, 2 is still less than 4। तो क्या करे, वापस से जो पीछे वाला एरे है या जो पीछे वाला लिस्ट है, नाउ हु इज द लास्ट लिस्ट, टेल मी, 1 to 1 इज द लास्ट एलिमेंट। तो जो भी लास्ट लिस्ट है 1, 2, 1 उसके आगे पीछे आउटर फॉर लूप में आते ही सबसे पहला 0, 0 ऐड कर देना, फिर एक एम्प्टी सब लिस्ट क्रिएट कर देना फॉर j इन रेंज 0 to 3 नहीं, ये 0 to 4 होगा, बिकॉज लास्ट एलिमेंट का लेंथ अगर 3 है तो अगला लिस्ट का लेंथ 4 होने वाला है, करेक्ट। होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग। सो 0 to 4 मीन्स व्हाट यू वांट टू से, अगेन इफ j is 0, temp of 0 plus temp of 1, correct, so that is 0 plus 1 which is going to give us 1, तो सब लिस्ट A 1 हो गया, j will become 1, 1 is less than 4, temp of 1 plus temp of 2 मतलब दूसरा और तीसरा एलिमेंट को सम करना है, 1 और 2 जो ऐड होकर 3 हो जाएगा, तो 1 के बाद में 3 अपेंड हो गया। इज दैट करेक्ट? j will become 2, प्लीज चेक द कंडीशन, कंडीशन पर आपका कंट्रोल चेक जरूर रखिए। 2 is less than 3, I'm sorry, 2 is still less than 4, तो क्या करना है, temp of 2 plus temp of 2 plus 1 मतलब 2 और 3 इंडेक्स नंबर पर, which is 2 plus 1 that is 3। इज इट? समझ रहे ना बात, ये हम कैसे कर रहे हैं?
Okay, this is index number 0, this is index number 1, right? This is index number 2, this is index number 3, and this is index number 4, right? तो इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 को ऐड करना मतलब 2 और 1 को ऐड करना. 2 plus 1 is how much? 3. 3 will be appended in the sub list. Correct? Now what will happen? Tell me. J will become 3. हाँ बाबा, 3 is less than 4. 3 अभी भी less than 4 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो क्या करे? एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 3 प्लस एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 4. Who is element at index number 3? 1. Who is element at index number 4? 0. So 1 plus 0 add होकर हो जाएगा 1. We are adding na in between. Correct? And this new result 1 will be added in the sub list, which will become 1, 2, 3. 3 कैसे आया? ये 3 था. Sorry. Okay. 3 typing mistake people. Last one. उसके बाद में नेक्स्ट इनर लूप में j हो जाएगा 3 से बढ़कर 4, बट सॉरी 4 इज नॉट लेस देन 4. सो कंडीशन ऑफ द इनर लूप विल टर्न फॉल्स. हम इनर फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे. बाहर आते ही आपको ये जो नया सब लिस्ट जनरेट हुआ a में, आपको मेन लिस्ट RES में अपेंड करना है. RES में अपेंड करके वो लिस्ट ऐसे बन जाएगा. इज दैट करेक्ट? दैट इज 1 3 3 1. राइट, फाइन. चलिए, इनर फॉर लूप से बाहर आ गए, RES में अपेंड भी कर दिया, आप फिर से आउटर फॉर लूप में चले गए. इज इट राइट? वो 0 था, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3. ओके 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 ओके. आई होप आई एम कनेक्टेड. फॉर अ मोमेंट आई लॉस्ट द कनेक्शन. ओके, फॉर अ मोमेंट आई लॉस्ट द कनेक्शन. एनीवेज, ऑलराइट. सो 3 हो गया, 3 स्टिल लेस देन 4, आउटर फॉर लूप. अभी क्या करना है? Who is the last element of the list? Tell me. अभी तक का अपना मेन लिस्ट यहाँ तक जनरेट हुआ, तो अभी का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 1 3 3 1. उसके आगे पीछे सबसे पहला आउटर फॉर लूप अंदर आते ही 2 0 ऐड करेगा. एम आई राइट? एक एम्प्टी लिस्ट अपेंड करेगा. होपिंग यू अंडरस्टैंड. एक और इंडेक्स बढ़ जाएगा. इनर फॉर लूप कहाँ तक चलाना है? पीछे वाला लूप की, लेट मी से लास्ट एलिमेंट, पीछे वाले रो की लेंथ प्लस 1. करेक्ट? नाउ व्हाट वाज पीछे वाला रो? 1 3 3 1. उसका लेंथ कितना है? 4. 4 plus 1 means 5. सो इनर फॉर लूप विल रन टिल 5. ऑलराइट. उसका ये सब ड्राई रन सेम रहेगा. j equals to 4 तक चलेगा वो, बिकॉज 4 विल बी स्टिल लेस देन 5 इन द इनर फॉर लूप. इज दैट करेक्ट? सो temp of 4 plus temp of 5. Is that correct? Right? I think this time it will give us again 1. So final list here will become whatever. You have to correct this. 1 1 plus 3 1 plus 3 4 4 plus 3 plus 3 6 1. हाँ बराबर जा रहे हैं 6. Alright, 6 plus 3 again 4. So वैसा ही है ना, 1 4 6 4 1. हाँ करेक्ट people, करेक्ट. Alright, then j will become 5 friends, and then j will become 5, but unfortunately 5 is not less than 5 in the inner for loop. Is that correct? 5 is not less than 5, so the condition turn false and we have to come out. Alright, and maybe in the next iteration you will come out of the outer for loop also, क्योंकि 4 रो अभी तक का जनरेट हो चुके हैं and we are running from 0 to 4 only. Correct? Outer for loop abhi ho jayega 4, and 4 is not less than 4, so we will come out. Somebody please write in the chat box. Is that clear or not? Are you understanding? Okay, something you want me to repeat again? Sure? Yes ma'am. Thank you Deva. Thank you. Okay, it's a little standard code of Pascal triangle that you need to understand. Okay, fine. Let's quickly put this program in this program, same program. Control C. I write here. Okay, this is one. I think this I told you is a RES dot append
A. Let me run till here and check if it is all right or not. Okay, enter the number of rows 5. Of course, it's not printing. It's not printing. That means the reason why, because we have not used the print statement anywhere. Is it correct? We haven't used the print statement anywhere. So what can we do is, सब पूरे लूप से जब आप बाहर आ जाएंगे, एक print दे देना यहाँ पे, say print res, and if I say run, are you understanding? This is how it is printing. But if you want to print it in the form of that triangle, वैसे triangle के format में print करना है, तो for I in res, print I. Enter the number of rows. Okay, so that is printing it this way. Let's comment this. 1 minute. 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 and all. Okay, you don't want this to be printed as a list. You want it to be listed outside the list. तो कोई बात नहीं. हर I अपने आप में एक list है. तो आप inner for loop चलाइए. Say for j in I. Print j. First I is 1, so first j in the list, first list will be 1 itself. Second I is 1, 1, तो पहला j इस I में होगा 1, दूसरा j इस I में होगा 1. Third list is 1, 2, 1. So first j will be 1, second j will be 2 in third I, and third j will be 1. Right? This way it will go. Okay, I think indentation is missing here. Correct? Indentation. So if I say run, enter the number of rows 5. Okay, it will print all on a different line. तो हम ऐसा दे सकते हैं. That means in the end print space. That means do not let the next print be followed by new line. New line पे तब जाना जब आप row change करते हो. Something like this. This logic you use of your own. I hope you understand. Is that correct? So 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 and the story goes on. The remaining spacing and all, I leave it up to you. You try to format the program a little bit. I think because we have taken a lot of time for Pascal triangle alone today. Am I right? The program deserved it. Okay, it's a lovely logic. In fact, उसको उतना time deserve करता है. कोई बात नहीं, we have ample of time together to deal with other code. Alright. अच्छा, एक program है in this question bank, not taking a lot of your time. There is one program in the question bank which says, see this one. This one. Pascal triangle is done. Okay, let's do this one. Why not? Create a tuple and display those elements who are greater than 50. This is a very simple program. Okay, create a tuple. Let me copy this tuple. You know tuple, right? For my friends who are new to tuple, tuple is that data structure whose data cannot be edited. Once created, tuple elements can never be edited. Okay, so this is a tuple. Let me create it. So say T for I in T. Okay, if I, what will be the first I in T? 11. It's an iterable object, correct? Tuple, set, dictionary, इनको सब हम बोलते हैं iterable है. Iterable means what? Automatically it will go to the next element if you run the for loop over it. That's called as an iterable. For I in T, so first I in the TV is 11. So if I is greater than 50, only then print I. Is that correct? Only then print I. So if I say run this code, okay, so tuple has so many elements, but it has printed only those which are greater than I. Similarly, you can write a program only if it is divisible by 2. So how you will change it? If I
is divisible by 2. We use modulus operator for the test of divisibility. जिनको modulus नहीं पता है एक बार R&D करो, check our old videos, you will get the use of this arithmetic operator. Operator वाला topic में ढूंढना. I modulus 2. Modulus operator always check remainder. कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं वो कैसे चेक करे? 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए. करेक्ट? दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. Number is divisible by 5 or not? That means on dividing by 5, remainder should be 0. Right? So if you divide by 2, if the remainder is 0, only then print I. Check. Okay, so many numbers are even here. What if you want to print only odd numbers from this tuple? That means after dividing by 2, the remainder should not be equal to 0. So these are the odd numbers. Is it correct? The remainder should not be equal to 2 or equal to 0. That means these are the list of odd numbers. Okay. People, I lost the question from here. हाँ, देखिए ये वाला question. The last question of this slide. Write a program to illustrate the use of inbuilt functions of a string. Inbuilt functions of a string. Now, I was knowing that Pascal triangle is going to take a lot of time. So few of these programs I have already kept coded. आप खाली उसको check करो. दुनिया भर के functions are inbuilt functions of the string. There are a lot of functions which are inbuilt. Some of the functions that I have used here is this one. Okay, let me copy this. Let me paste it to Jupyter Notebook. Okay, look, this is a string. देख लो. ओके, कोई भी 8-10 फंक्शन बता देना. दिस इज अ स्ट्रिंग. लेट मी कमेंट दिस एंटायर कोड. ओके, सी दिस 3 single inverted quotes people is for multi-line comment. Okay, that means if you want to comment multiple lines, of course every line you will not keep marking hash, hash and hash. That is too time consuming. What if I want to comment 100 lines? So if you want to comment more than one line, make sure that you put it with these 3 inverted quotes. Alright, str. This is str. String is Mumbai is a city. Str dot capitalize. It turns only the first letter capital. Okay, so Mumbai is a city. M is capital here. What happened? I think there is some problem. Okay, let me do one thing. Anyways, I'll check that later. Can I ignore it for a time being? Alright, next. 1 minute, please. Okay. Okay, it hardly makes a difference. Never mind, never mind. We focus only on the output as for now. So capitalize is to take this one. Str is equals to say Python. And I say str dot upper. Str dot upper. You see it got converted into uppercase. Suppose ये ऐसा था. Python. And I say str dot lower. तो जो lower है वो lower ही रहेगा. जो upper है वो lower में convert होगा. Got it? That's Python. But if I write str dot capitalize, only the first letter changes to uppercase like this. Alright. If you want to check is all the letter of the string alphabet, so like is alpha. True. If you write is decimal, that means is all the letter a decimal number. It says false. Let's take another string called as phone number. Okay, phone number is 9870989999, something like this. Right? So if I say phone dot is decimal, it returns true. That means the entire string is all the characters here are decimals. Alright, fine. What else we can do? Say there is a string phone and there is a string called as phone 1.
and there is a hyphen here. Okay, hyphen here. So if I want to write like this, check it out क्या होता है. If I say join phone with phone 1, okay, ignore this. If I write like this, hyphen, I need to check the problem with it. Never mind. Okay, fine. I need to check it out. Okay. So let me copy this code for a moment of time. It is taking a lot of time. See whenever it can be done. Alright, fine. Acha. There is one more string method, inbuilt string method called as replace. Okay, so if I say replace, everywhere where there is small t, I want to replace it with, say like this, string si Python. This is a string, and I want to, Python is a language or programming language. I want to replace a in the string str with dollar. I want to replace it and with dollar. So if I say run, you could see here Python is a language ka a, language ka ek aur a, this all got replaced with dollar. There is another function like replace called as find. If you want to find a particular letter or a word, say I want to find is, look what it returns, 7. That means is starts from index number 7. It returns a starting index number. Check karo, python मतलब total 6. So last वाला का index होगा 5, 0 to 5. This is 6 and I will start from 7. Right? Take it on a notepad like this please. Say Python is a language. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Space is 6. So I का इसका I starting from 7. और अगर A लिखा मैंने तो फर्स्ट ऑकरेंस देखता है. First occurrence 8, 9. A is starting from 10. This substring is starting from position number 10. So check it out once. ऐसा हो रहा है कि नहीं? A, yes, correct. अच्छा, if I want to find index number of a particular letter, say I want to find index number of L. So wherever the first L comes, उसका index number देगा, हाँ? 12. बराबर है 7, 8, 9, यहाँ तक 10 था, 11 and 12, करेक्ट. बिकॉज ए तक का 10 था, ए के बाद का स्पेस 11 हो गया, और एल दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर 12. होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग. Is that correct? So these are what the different string functions. If I write like this, L trim 40. That means string को left, L trim means left trim. What is the total length of this string? First let me check that. Length of str. Okay, that is 20. 40 से आपको अगर left trim करना है means what, you know, L trim 40. That means string should be shifted to the left by padding 20 more space in the right side. Why 20? ये 40 में string का length included रहता है. Okay, it will do padding of the space, but after subtracting the length of the final string. So Python is a language will be shifted to the left. उसको left में shift करने, extreme left में shift करने के लिए हमको right में 20 space add करना पड़ेगा, ताकि total length 40 हो जाए. Okay, it doesn't show now. No problem. And if I say R trim, this is the problem basically. It doesn't work here, L and R. Okay, never mind. Let me try it here once.
Okay, okay. I think what I'm trying to do is cutting the spaces. The actual function expected here is not trim but justify. Okay, the definition what I told you, that was for justify, just a slip of tongue. Okay, L justify first. That means shift the string towards the left by adding some spaces in the right. लेफ्ट का आपको इफेक्ट हाँ दिख कर आता है, देखिए इतना स्पेसेस छोड़ दिया, मतलब ये टोटल 20 का लेंथ छोड़ दिया और स्ट्रिंग को एक्सट्रीम लेफ्ट में लेकर आए. सो इफ आई डू आर ट्रिम या आर जस्ट, सॉरी आई अगेन टोल्ड यू ट्रिम इज जस्टिफाई. That means right justify. String will be shifted to the right side. कितना right में shift करना है? 40 is a total length, जिसमें से 20 तो खुद string का ही length है, आपको सब 40 में ही adjust करना है. So string will be shifted to the extreme right by keeping for 20 spaces in the left. Alright, fine. Moral of the story. These are the different kind of string functions that you can apply in your code. Fine. If any small simple program that I could show you. Okay, let's do this one. Create a dictionary. Just create a dictionary and check whether a particular key is present or not in the dictionary. How will you check that? See, dictionary is created like this in a curly bracket. And dictionary always contains key value pair. Alright, dictionary contains key value pair. Please keep on acknowledging in the chat box, guys. That helps us to understand you are getting it or not. जैसे कि employee code, EMP code. Say 1. 1 is a number, that's why I have not written in quotes. Employee name. Say Raj. And employee salary, say 25,000. Okay, so if I say like this, D of EMP code in D, false. That means this is not. Is it right? It should be true actually. Yeah, that was wrong. You did not write D. Just write the key name. Is the key EMP code in D true? And suppose I make a spelling mistake like this. So it says me false. Hoping you understand. और अगर सब चीज को चेक करना है तो कैसे करेंगे आप? For loop रन करना पड़ेगा. जैसे कि for I in D. Say if I say just print I, it will print all the keys. Am I right? That's it. If you just check is I in, अच्छा ये तो ऑलरेडी चेक ही कर रहा है तो आपको उसके लिए जरूरत नहीं है. For loop रन करके की फिर मतलब नहीं है. But just take one key. If I want to check the contact number is there in the dictionary or not, what will you do? So simply contact NO in D, it returns true or false. No, contact number, the key naming contact number is not present in the dictionary. Thank you everyone who are responding in the chat section. Alright, I hope you got my point. Fine, I think that's all for the day today. We have solved most of the programs which are required to be revised. Alright, we'll see back tomorrow if we could complete some more remaining question like of file handling and what next, exception handling, as well as object oriented programming, to give you a solid revision of what we have done. Alright, I'll check and look into to my best how can I share this entire PPT and the question bank at your end so that you can also do your self practice. Alright, fine. Anyways, a very quick recap of what we have learned today. Right, a very quick recap. We started with the Pascal triangle. It was a very standard program. Welcome.
It was a good program to understand the logic for. It took a lot of time, but that was worthy to understand. आप खुद अपना लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करके देखो. इफ इट इज पॉसिबल यू कैन कम अप विद समथिंग बेटर. As I told you in the beginning, there are many ways to write code for a Pascal triangle. Is it right? Some people also say like you can write 11 raised to the power 0, then 11 raised to the power 1, then 11 raised to the power 2, because 11 square is 121. 11 raised to 1 will be 1 1. तो वही तो second row है उसका. 11 raised to 0, anything raised to 0 is 1. 11 cube 1331. 11 का fourth power 14641. 11 का fifth power, actually it works only till 11 raised to the power 5. 11 raised to the power 6 से आंसर wrong आ जाता है. So 11 का power, that logic is suited for Pascal triangle only if the number of rows are 5. If the number of rows are more than 5, then the logic is a foolproof idea. Alright, we moved on to understand some inbuilt string function. We also understood how to check particular item in a tuple if it is greater than something, less than something, divisible by something, and so on. Alright, fine. Anyways, that's all for the session today. Shall see you back again tomorrow sharp at 6 p.m. Mostly we are starting with NumPy pandas now. Okay, make sure that you aren't missing the session. NumPy और panda से analytics शुरू होता है. Okay, data science, data analytics, NumPy panda से शुरू आपका base बन जाता है. Alright, fine. Bye. And do not forget to like our sessions, to ask your other of the friends to benefit out of it and subscribe to it. Okay, see you back. Goodbye.